everyone, welcome to Biophilia, your all-time study mate. Today we are going to start a new chapter from class 11 named as Structural Organization of Animals. If you feel this video helps you in any way, do not forget to like, share and subscribe to our amazing channel. So before starting the learning part of this chapter, let's try to build the theme of this chapter. So are you all ready to absorb the chapter very well? क्या सब तैयार है? So if yes, then let's get started by understanding this chapter from the very base. So यहाँ पे हम एक concept build करेंगे. That is, you can see over here there are two photographs. एक जो है that is unicellular organisms और दूसरे side पे है multicellular organisms. So unicellular organisms are just like one man army. वो एक ही आर्मी चला रहे हैं with the one single man. So only one cell is doing all the functions, that is digestion, respiration, circulation, excretion, motion. Everything is done by one single cell. And you can imagine अगर एक ही आदमी को ये सारे काम करने के लिए बोल दिया जाए कि you do everything, you go and shop groceries, you go and clean the house, you cook food and all those stuff, अगर एक ही आदमी को करने बोल दिया जाए, what is going to happen? The animal or that particular person won't have energy left out for other things to have in his life. So that same thing happens with the unicellular organisms. Since only one cell functions all other functions, because of that it is not going to have the ability to get modified into themselves. So ये बात मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं है. मल्टीसेल्युलर है मतलब दे आर मेनी सेल्स टुगेदर. उनके पास एक ग्रुप ऑफ टीम है, एक टीम है बहुत सारे लोगों की जो एक साथ काम कर रहे हैं so that that work can be successful. And because of many people working for one single thing, they are more successful and more efficient. So this same thing that you can remember with one man army or a team of people, that is nothing but the build of the concept कि unicellular organisms एक ही सेल सब काम नहीं कर सकता है and because of that we need to form a group. So first of all हुआ था group of cells. So cells सारे एक साथ आके they had a discussion. You can remember it as like a small story कि सारे सेल्स अलग अलग अपने आप से काम कर रहे थे. उनकी एक मीटिंग बैठक हुई जहाँ पे सारे सेल्स आके बोले हमें तो टाइम बचता नहीं है कि हम कुछ और करें, वी नीड टू हैव सम सॉल्यूशन फॉर दैट. सो व्हाट वाज द आइडिया कि हम सब एक ग्रुप बनाते हैं and a group will function for a specific काम, that is 5 cells will be working for digestion, 5 will be working for respiration. ऐसे करके they had formed colonies of cell or group of cells. So ऐसे groups बना के they thought why don't we come together and form a organ. जो same काम कर रहे हैं वो एक अलग बनाएंगे and they modified into organs and many organs came together formed organism. And that is what is nothing but the hierarchy or the organization. So ये organizations मिलता है in multicellular organisms that can be as animals or plants. So ये hierarchy जो हमने देखा कि एक funny way में जो हमने समझा कि सारे individual cells की बैठक हुई और बैठक में तय हुआ कि there will be group for a specific function. That same thing occurred in the hierarchy, that was the cells moving on to form groups of tissues, tissues coming together to form organs and organs to organ system and a complete organism. So a complete organism is because of the multiple cells which come together to form one single organism. So ये जो cells है, tissues है, organs है, organ system, they all are going to split their work and they will work in such a way that they will have division of labor. वो अपना अपना काम बांट के कर रहे हैं. So in office there are different departments working for the same organization. So एक ही organism के लिए there are many departments. So you can remember it that way with the help of office having different departments working for the single cause. So like that way
एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड द सिस्टम्स, they will split their work in harmony, that is division of labor, and they will contribute to the survival of the body, or in other ways you can coordinate with the help of the office example. So similarly, that was a funny way to help you understand that why the unicellular organisms were not only present on earth, unicellular से multicellular तक की भी journey तय हुई है on the earth. So what was the need that not only unicellular organisms were left, multicellular आने की क्यों जरूरत पड़ी? So that was the build of the concept for this chapter. And now we will be understanding about the first hierarchical level, that is the tissues. So cells जब एक साथ आए बैठक में and the suggestion was given to form tissues, that is going to be the topic for us for the next slide. So tissues क्या होते हैं? What is tissue? So tissue, since hierarchy में cells के बाद tissue आता है, so that is going to be a group of similar cells. जो एक जैसे cells है वो साथ में आके एक group बनाएंगे, and that group will have same origin but performing a specific function or a different function. So origin same होगा और specific function होगा, ऐसे group के cells को बोलते हैं tissue. So this tissue can vary with the body to body. So एक human body में there are different types of tissues that we are going to see in detail after in these slides. But एक ही टिश्यू सारे काम नहीं करेगा. There might be various types of tissues, but that specific tissue will have a specific function and a same origin. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग टिश्यू. सो द फर्स्ट इज गोइंग टू बी, ये टिश्यू जो नाम था, द टर्म दैट वाज गिवन बाय चार्ट. सो ही वाज द पर्सन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द टर्म टिश्यू. अब टिश्यू फर्स्ट किसने देखा? सो फर्स्ट टाइम टिश्यू प्लांट्स में देखा था बाय एनग्र्यू. सो एनग्र्यू फर्स्ट टाइम प्लांट्स में टिश्यू ढूंढा. एंड हिस्टोलॉजी, अब हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी इज नथिंग बट गोइंग टू बी द स्टडी ऑफ टिश्यूज. सो जो लोग टिश्यूज को स्टडी करते हैं to understand the various types of tissue, they are called studying histology. So histology जो term था वो दिया था मेयर ने. So microscopic anatomy, again that is a part of histology. So that was termed by Marsilio Malpighi. अब histology जो है, that is study of tissues. So who is the father of histology? It is going to be Bichat, and he was also person who gave the term tissue. अभी ये tissues first time in organisms कहाँ पे मिले थे? They first appeared in the organisms which come under the phylum of coelentrates. So वो जो organisms है उनको coelentrates बोलते हैं, जिनमें first time tissue formation was found. So ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर MCQs पूछे जा सकते हैं. So these are mainly the memory based points जिसको आप ऐसे के वैसे याद करके you can have better grasp on those MCQ questions. So now let's see about the animal tissues. So यहाँ पे हम animal tissues discuss करेंगे. In some other chapter we would be discussing about the plant tissues. So animal tissues जो होते हैं, they are majorly of 4 types. First होता है that is epithelial tissue. Second होता है connective tissue. Third is muscular tissue, and fourth is nervous tissue. So ये 4 major types of tissues that each and every animal possess. So अब first बात करते हैं about epithelial tissue. So epithelial tissue के अंदर there is various types of classification that would be discussed in detail for the further special video for epithelial tissue. वैसे ही connective tissue के भी various parts होते हैं. Muscular and nervous also has their own classification. So now let's see about the tissues in some much more detail. So origin of tissues कहाँ से होता है? How is this tissue formed when a multicellular organism takes birth? So जब human के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, so majorly we will be speaking in the terms of human body.
सो ह्यूमन बॉडी जब वूम्ब में ग्रो करती है, सो इन दोज टाइम्स देयर आर 3 जर्म लेयर्स. सो सेल्स अपने आप को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं. सो देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू डिफरेंट लेयर्स. तो वैसे वो 3 लेयर्स में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिविजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स. सो अब जो सबसे बाहर के साइड पे जो लेयर होती है, दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्टोडर्म. सो जो सबसे बाहर होगी दैट वुड बी एक्टोडर्म. फिर जो मिडिल में होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज मीजोडर्म, एंड द मोस्ट इनर लेयर वुड बी कॉल्ड एज इनर लेयर. सो ऐसे जो 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, दे वुड बी द germ layers, और ये germ layers की वजह से the tissue formation is going to occur. क्योंकि tissues क्या होते हैं? Tissues are nothing but group of cells, और ये जो germ layers थे वो भी क्या है? Group of cells. So now the tissue is going to form either from these 3 layers or with all these layers. So let's see about the tissues. जो types हमने देखे थे, 4 types of tissues. So those 4 types of tissues के origin क्या होते हैं? So अगर epithelial tissue की बात करें, so in epithelial tissue the origin can be from the ectoderm, यानी जो सबसे बाहर layer जो बनी थी cells की, it can origin from that, or mesoderm or endoderm. So in a way you can understand जो epithelial tissue होता है, तो उसका formation can happen from all the 3 germ layers. So this is going to be a very important MCQ कि ऐसे कौन से टाइप का टिश्यू है which can get origin from all the 3 layers. So वो कौन सा होगा? epithelial tissue. So connective tissue, जो connective tissue है that is regarding what? It is regarding blood and related to circulatory system. So जो circulatory system के related जो tissues आएंगे, they are nothing but connective tissues. So that is one system. वैसे ही bone भी आ सकता है under connective tissues. So these are some examples to understand connective tissue. So ये जो blood है, circulatory system है, so they can have their origin as mesoderm. फिर मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं दे आर द एक्टोडर्म ओरिजिन टिश्यूज, और नर्वस जो होते हैं दे आर मीजोडर्म ओरिजिन. So that was about the origin of the tissues. Now let's see about the next topic. नेक्स्ट टॉपिक होता है फंक्शंस ऑफ टिश्यूज. सो फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? सो फॉर एपिथेलियल टिश्यू फंक्शंस होते हैं प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, absorption, reproduction और secretion. So इनको याद करने के लिए एक आप ट्रिक याद रख सकते हो, that is Pear's. So there is a soap called Pear's. So this soap can help you to remember epithelial tissue. So trick क्या है? Pear's for the function of epithelial tissue. जैसे protection. So protection के लिए कौन काम आता है? Skin. So skin is going to provide you protection. So skin is nothing but a form of epithelial tissue. Then excretion, even skin can help you excrete out sweat. Sweat का excretion होता है. Absorption आपके intestine में जो internal absorption होता है that can happen because of epithelial tissues. Reproduction होता है यानी epithelial tissues जो टेस्टिकल्स में या ओवरीज में होते हैं, दे कैन हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स और डाइजेस्टिव gases. All those can happen because of epithelial tissues. So इनको याद रखने का ट्रिक क्या बताया? Pear's का साबुन. Okay, so you can remember the functions by the simple word. अब देखते हैं सेकेंड टिश्यू. सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू. सो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको अगेन देयर इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर, दैट इज पास्ट सपोर्ट. सो कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? दैट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट. सो अगेन विथ दिस पास्ट सपोर्ट क्या याद रखना है? फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू.
नेक्स्ट होता है मस्कुलर टिश्यू, जिसका फंक्शन होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सो आपका यहाँ पे ट्रिक क्या होगा, ट्रिक होगा M एंड L, M एंड N, जैसे M एंड M होता है चॉकलेट, वैसे ही यू हैव टू रिमेम्बर इट इज M एंड L, दैट इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन फॉर मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट होता है नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू के लिए ट्रिक क्या याद रखोगे, C एंड C, that is control and coordination with the help of nerve impulses. The nervous tissue is going to have its function. So यहाँ पे हमने देख लिए सारे functions of the 4 types of tissues. So with this we will stop about the introduction of the tissues. अगले वीडियो में हम देखेंगे about the first type of tissue, that is epithelial tissue. सो अगले वीडियो में हम देखेंगे इन डिटेल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन विद अस इन दैट video to understand in detail about epithelial tissue. So till we come back with the epithelial tissue for you, don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell icon so you get notified for the next video. Till then, keep smiling, keep studying hard, and we will meet back you soon with one more amazing session.